बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनाज़ा गफ़ूर और आप सब लोगों को जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम किड्स मैथमेटिक्स बुक 5 के यूनिट 5 डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कन्वर्जन ऑफ टाइम, वेयर द टाइम इज़ ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, और ऑल्सो years, months and days and weeks. And apart from that, we will be doing the addition and subtraction in order to calculate the word problems. So चलिए चलते हैं अपने सबक की जानिब। Conversion of the months or the years, or you can say days and weeks. But in order to determine this, it is very important to look at one of the table given on page number 86. अब आप पेज नंबर 86 पे देखिए, वहाँ पे एक टेबल गिवन है। 12 months is equals to 1 year, 10 years is equals to 1 decade, 100 years is equals to 1 century, 365 days is equals to 1 normal or ordinary year, 366 days is equals to 1 year or 1 leap year, 1000 year is equals to 1 millennium. सो इस की को मद्देनज़र रखते हुए अब हम कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कन्वर्टिंग ईयर्स टू मंथ, एग्जैक्टली आपने सही सोचा। ईयर्स क्या है? बिगर नंबर, एंड मंथ्स क्या है? स्मॉलर। सो वंस वी आर मूविंग फ्रॉम द बिगर टू स्मॉलर यूनिट, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। सो इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत होगी। नाउ सी पेज नंबर 87, converting months to year. Months क्या है? Smaller than years. So once we move from smaller to the bigger unit, we always divide. So let's see this by one of the example. Arsalan went to England for 48 months. Let's find out how many years did he spend there. To convert months to years, we divide the given number of months by 12. सो हम डिवाइड करेंगे, और किससे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और ये हमारी की में भी लिखा है, और वो की हमें पेज नंबर 86 पे मिलती है। सो 48 months is equals to 48 divided by 12, so we will get 4 years. Dear teachers, अब चलते हैं converting months to days, यानी कि मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। अब मंथ्स डेज़ के कंपैरिजन में बिगर है, सो देयरफॉर वंस वी मूव फ्रॉम बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी हाउ मैनी डेज आर देयर इन 8 months. Now to convert months into days, we will multiply the given number of months by 30. So 8 months multiplied by 30 days would give us 240 days. चलिए टीचर्स, अब मूव करते हैं पेज नंबर 88 के ऊपर, which is converting weeks to days. Again, जब हम week से days की तरफ आएंगे, यानी कि we are moving a unit which is a bigger one to a smaller one. So in that case आपको रूल का तो पता ही होगा। Now let's move on to converting days to weeks. So we are moving to the smaller unit to the bigger unit. So in that case we are going to divide. So let's see one of the example. The example is, let's convert 375 days to weeks and days. To convert days to weeks and days, we divide the number of days by 7. अब 7 से क्यों करेंगे? Because week के अंदर 7 days होते हैं। The quotient will be the weeks and the remainder will be the days. अब आप बच्चों को नॉर्मल डिवीजन के मेथड के थ्रू 375 को 7 से डिवाइड करवाएं। Now once this division is done, you can see that on the top, which is the quotient, you will find the value 53, that is your weeks, जबकि यहाँ पे एंड पे 4 बचा है, यानी कि रिमाइंडर। सो ये आपके डेज होंगे। सो द आंसर इज़ 53 वीक्स एंड 4 डेज। डियर टीचर्स, आई होप आपको ये सारी कन्वर्जन मेथड और डिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।